Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. Cryptocurrencies were butchered this week as hawkish fed the crypto-friendly Silvergate Bank deciding to wind up business, and a possible government sale of Silk Road-related Bitcoin have given investors ample reason to sell. Bitcoin sank below $20,000 for the first time in 7 weeks. At last quoted near $19,960 level. Ethereum, the second largest crypto in market value, was recently down over 8% after the New York Attorney General's office suing KuCoin, alleging the crypto exchange offered unregistered securities and commodities. The lawsuit alleges that ETH, Luna and Terra USD were securities. बढ़ते हैं आगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गुरुवार देर रात एक अपील दायर की जिसमें बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयचर डिजिटल की एसेट हासिल करने के लिए फाइनेंस यूएस के अरबों डॉलर की योजना की अनुमति देने के न्यूयॉर्क बैंकरप्सी जज के फैसले को चुनौती दी गई। अपील जो यूएस ट्रस्टी के ऑफिस द्वारा दायर की गई थी, बैंकरप्सी की देखरेख के लिए जिम्मेदार डीओजे की एक शाखा थी। जज माइकल द्वारा विवादास्पद 4 दिवसीय मैराथन सुनवाई के बाद सौदे को मंजूरी देने के ठीक एक दिन बाद आई है। अगर वॉयचर खुद को बाइनेंस यूएस को बेचने के अपने करंट प्लान के जरिए नहीं जाने का फैसला करता है या अगर रेगुलेटर सेल को रोकने में सफल होते हैं, दूसरा ऑप्शन बैंकक्रप्ट लेंडर के लिए खुद को लिक्विडेट करना है, जिसकी वजह से क्रेडिटर्स के लिए बहुत कम रिटर्न्स की संभावना होगी। Moving on, the US Treasury Department has proposed a 30% excise tax on the cost of powering crypto mining facilities. A provision in the department's Green Book, its list of tax proposals and explanations for the US President's budget proposal, would create a phased-in excise tax based on the costs of the electricity used in crypto mining, imposed on the companies using computing resources to mine cryptocurrencies. These companies would also be required to report how much electricity they use and what type of power was tapped. The tax would be phased in over the next 3 years, increasing 10% each year. बढ़ते आगे। चाइना के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क और इंस्टेंट मैसेंजर वीचैट के लेटेस्ट अपडेट में अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की पेमेंट सर्विस वीचैट पे शामिल है। 1.2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स नए फीचर्स का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे और कुछ विजेट्स में गुड्स, सर्विसेज और यूटिलिटी बिल्स के भुगतान के लिए डिजिटल युआन का इस्तेमाल करेंगे। एडिशनल यूज केसेस जैसे वीचैट यूजर्स के बीच डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस शुरू करना, जिसे फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है। Moving on, Starbucks Odyssey, the coffee company's Web3 loyalty program, today released its first limited edition non-fungible tokens, which it calls stamps. The program, still in invitation-only beta, allows members to complete activities such as quizzes and in-store purchase to earn stamps, which can be collected or resold on Nifty Gateway. The 2000-item siren collection features a version of the company's iconic siren with the stamps priced at $100. Members of Starbucks Odyssey were able to buy 2 stamps each starting at 12 p.m. ET and could pay by credit card or by connecting their MetaMask wallet. बढ़ते आगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ब्लॉकचेन.com अपने हाल ही में लॉन्च किए गए एसेट मैनेजमेंट आर्म के ऑपरेशंस को सस्पेंड कर रही है, जो लंबे समय तक क्रिप्टो विंटर को अपने फैसले का कारण बता रही है। ब्लॉकचेन.com एसेट मैनेजमेंट या BCAM को अप्रैल 2022 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के प्रयास में शुरू किया गया था। इसके कुछ ही समय बाद क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री ने एक कठिन अवधि का अनुभव किया। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क और अन्य क्रिप्टो फर्म्स के कोलैप्स होने की वजह से एसेट प्राइसेस में तेजी से गिरावट आई। Moving on, Palm Foundation, the company behind non-fungible token ecosystem Palm Network, said Thursday it's teaming up with Pussy Riot's Nadia Tolokonikova to teach a class on digital activism, as well as curate an upcoming feminist art contest with Palm DAO, a decentralized autonomous organization. Tolokoneva's activist masterclass will draw upon experiences from her career as an artist and activist fighting for social and political justice through creative expression. The course will be open to Palm community members in May through the Palm Academy, the network's native learning hub. That's all in this bulletin. And now let's move on to our special segment, Weekly Wrap.
and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Leading cryptocurrencies were butchered this week as hawkish fed the crypto-friendly Silvergate Bank deciding to wind up business, and a possible government sale of Silk Road-related Bitcoin have given investors ample reason to sell. Bitcoin sank below $20,000 for the first time in 7 weeks. It last quoted near $19,960 levels. Ethereum, the second largest crypto in market value, was recently down over 8% after the New York Attorney General's office suing KuCoin, alleging the crypto exchange offered unregistered securities and commodities. The lawsuit alleges that ETH, Luna, and Terra USD were securities. Values of these coins is dependent on the efforts of others, including co-founder Vitalik Buterin. KuCoin Earn is alleged to be a lending and staking product, which are unregistered securities. The suit is the first time a regulator has claimed in court that Ether is a security. The Securities and Exchange Commission Chairman Gary Gensler has hinted that his agency might consider Ether to be a security. The SEC's sister regulatory agency, the Commodity Futures Trading Commission, has long maintained that both Bitcoin and Ether are commodity assets. The global cryptocurrency market capitalization has declined by 7.19% in the last 24 hours to $925.22 billion. During the same period, the total crypto market volume grew by 58.87% to $68.27 billion, with decentralized finance representing 7.54% of this volume. The volume of stablecoins was also up, now accounting for 91.91% of the total crypto market volume and totaling $62.75 billion. Bitcoin's dominance has decreased by 0.62%, with its market share now at 41.46%. Now let's cut across to Manoj Dhara to know why the market is underperforming today. Over to you, Manoj. Bitcoin prices slumped after Silvergate, the crypto-friendly lender, decided to voluntarily liquidate its assets and wind down its operations. So this announcement was done by Silvergate holding company, Silvergate Capital Corp, on Wednesday. The largest cryptocurrency by total market cap has been on the decline since the beginning of March. In fact, Bitcoin still faces several events in the near term that market men believe could send it even lower. The Bitcoin price is under heavy pressure due to the fears of sticky inflation. The Mt. Gox creditors will have an additional 1 month to decide on an October payout or wait for the possibility of the better claims. And in interesting news, the wallets that are connected to the US government law enforcement seizures, including those from the Silk Road marketplace, have started moving their bitcoins. Moving forward, there are several other factors that continue to destabilize crypto ecosystem, such as building regulatory on-site to track fraudulent activities, Binance BUSD fighting battle with the SEC, ban on Kraken exchange to undertake liquidity staking activity, and the broader concerns related to the risk assets such as strong US dollar. Global recessionary fears will likely to weigh on the investor sentiments going forward. Thank you, Manoj. The digital rupee, India's newly launched in-house central bank digital currency, is now being tested for offline functionality, according to Ajay Kumar Chaudhary, Executive Director of the Reserve Bank of India. As of February 25th, approximately $134 million and 800,000 transactions had been completed through wholesale CBDCs. Building on this progress, Chaudhary stated that the RBI is looking into CBDC's offline functionality. He told CNBC TV18 that the RBI is assessing the CBDC's potential for cross-border transactions and integration with legacy systems in other countries. He added, "We are eagerly looking forward to private sector and fintech's participation in CBDC. We will see their contribution, especially on offline and cross-border CBDC transactions." Moreover, speaking on behalf of the RBI, Chaudhary said that CBDC would soon become the medium of exchange and needs all features of physical currency, including anonymity. तो बहुत अच्छा मूव यहाँ पे एक आरबीआई के थ्रू लिया गया है। और इसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि पहले सीबीडीसी जब लॉन्च हुआ ही था, उसके बाद ज़्यादा इसमें यूजर्स ने इतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं किया, इतना ज़्यादा इसमें कोई कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं दी, ट्रैक्शन नहीं मिला। लेकिन फिर उसके बाद रिलायंस डिजिटल ने एक बड़ा स्टेप लिया, जहाँ पे रिलायंस डिजिटल के जो अन्य स्टोर हैं और खुद रिलायंस डिजिटल ने ये एक ऑप्शन दिया यूजर्स को कि वो यूपीआई के थ्रू या फिजिकल जो करेंसी है
के थ्रू या फिर CBDC के थ्रू पे कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मूव लिया गया और RBI ये भी चाहता है कि आगे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे आए और इसे हेल्प करे थोड़ा और यूजर्स में ये फैले और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इसे यूज़ करना शुरू करें। और RBI चाहता है कि बिल्कुल जैसे हमारा फिएट करेंसी है या हार्ड कैश है उसी तरह की ही फीचर्स हो CBDC के भी, वैसे ही एनोनिमिटी भी हो और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी जल्दी शुरू हो जाए। So moving on, the Centre will begin consultations on the skeletal form of the upcoming Digital India Bill on March 9. Minister of State for Electronics and Information Technology, Rajiv Chandrasekhar, reportedly said the government was waiting for the process for the Data Protection Bill, online gaming rules, etc. to be completed. Now we can move to the most important piece of our larger framework for the Internet, the Digital India Bill, which will be a global standard law for the next decade, Chandrasekhar said and told Indian Express. Taking a different approach, the government will not initially release the entire draft for public comment. According to the publication, it will first consult the public on the core tenets of the proposed legislation before releasing the final draft of the bill on March 9th. Chandrasekhar will hold a meeting with stakeholders including consumers, lawyers and industry representatives as part of the consultations. The meeting will take place in Bengaluru and the Ministry of Statistics is expected to present a basic framework, architecture and guidelines principles for the Digital India Bill. तो ये डिजिटल इंडिया बिल पर काफ़ी टाइम से काम हो रहा है, लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ जाए और फिर गेमिंग रूल्स जो हैं वो भी थोड़े से अच्छे से फ्रेम कर दिए जाएं, जो कि अभी जो बजट गया उसमें हमें देखने को मिला कि डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आ गया और गेमिंग रूल्स भी काफ़ी हद तक जो है वो लेआउट हो गए हैं। तो अब जो है कह रहे हैं कि जो डिजिटल इंडिया बिल है उसका ड्राफ्ट निकाला जाएगा, लेकिन अच्छी बात इसमें है कि इसमें पब्लिक को भी कंसल्ट किया जाएगा और सिर्फ पब्लिक को नहीं, लॉयर्स को, जैसे कहा कि इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से उनसे भी सलाह ली जाएगी, उनको भी कंसल्ट किया जाएगा और उसके बाद इस फाइनल बिल को जो है तैयार किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने और ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन सभी जो पब्लिक को दिया गया है कि पहले उनके पास ये जा सकता है, वो भी देख सकते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके बाद क्या ऐड किया जाना चाहिए या फिर उनका क्या इस पे व्यू पॉइंट। बिल्कुल। Moving on March 7, the Gazette of India published a notification from the Ministry of Finance subjecting a range of transactions with crypto to the Prevention of Money Laundering Act 2002, namely the exchange, transfer, safekeeping and administration of virtual assets. Financial services related to an issuer's offer and sale of virtual assets also fall under the PMLA. The notification does not provide many details, but the PML Act obliges financial institutions to maintain a record of all transactions for the last 10 years, furnish these records to the officials if demanded, and verify the identity of all the clients. Written right on time when regulators all over the globe are tightening the AML standards for crypto, the notification will nevertheless complicate the life of crypto companies in India. In 2023, while celebrating India's first presidency at G20, the country's Finance Minister Nirmala Sitharaman urged international efforts to regulate crypto. She called for a coordinated effort for building and understanding the macro financial implications which could be used to reform crypto regulation globally. तो जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि पहले क्रिप्टो रेगुलेशंस एक अच्छे से सेट ऑफ रूल्स आ रहे, सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब G20 पे सबकी नज़र है, लेकिन यहाँ पे सीधा देखा जाए तो अब PMLA के आने के बाद जिसमें कि NFTs हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो, तो सभी को एक 10 साल पुराना जो एक रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना होगा और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी लगातार, वैसे तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो है उनकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, तो अब ये भी एक इसके ये जो PMLA आया है इसके बाद भी इनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्या है कि 10 साल का जब आपको डेटा स्टोर करने की बात की जाती है तो सबसे पहले नज़र में या जहन में ये बात आती है कि इतना सारा स्टोरेज डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, वो अपने आप में एक दिक्कत है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब भी अगर कहा जाए, जब भी इस डेटा को प्रोड्यूस करने की बात की जाए तो एक्सचेंजेस जो हैं दे शुड बी एबल टू डू दैट, और साथ में इतना ही नहीं, क्लाइंट्स की भी पूरी आइडेंटिटी क्या है, KYC क्या है। तो अब जो पहले KYC कुछ एक्सचेंजेस फॉलो करती थी, कुछ नहीं करती थी, अब मैंडेटरी हो गई है, ऑब्लिगेशन है कि KYC होनी ही चाहिए। आई थिंक एंड निश्चल शेट्टी ने कहा भी है ये कि इट्स अ वेरी गुड मूव, अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, इट्स गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, थोड़ा रेगुलेशन की तरफ, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना, थोड़ा लीगली चीज़ों को फॉलो करना क्रिप्टो में भी। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सो मूविंग ऑन,
Over 50,000 Bitcoin worth $1 billion were moved from multiple wallets connected to United States government law enforcement seizures and transferred to new addresses, with some moved to Coinbase on March 8th. According to data shared by on-chain analytics firm PeckShield, 3 transfers were made from US law enforcement agencies' wallets. These wallets held nearly 51,000 BTC seized by US agencies from the Silk Road marketplace in November 2021. The confiscated BTC was consolidated into 2 wallet addresses. Out of these 3 transfers, the majority appears to be internal transfers. However, approximately 9,861 BTC was sent to Coinbase. The other 2 included a 30,000 BTC transfer and a 9,000 BTC transfer. The Silk Road was an online black market and the first modern darknet market. It was launched in 2011 by its American founder Ross Ulbricht under the pseudonym Dread Pirate Roberts. The marketplace was one of the first to accept Bitcoin payments, helping to popularize crypto use. US law enforcement agencies confiscated multiple items from its founder, including hoards of BTC, which have been auctioned from time to time. तो यहाँ ये जो सिल्क रोड मार्केट प्लेस थी वो थोड़ा सा डार्क एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, तो जैसे कि हमने बताया अभी 2011 में लॉन्च हुई थी, और तो जब इसको सीज़ किया यूएस गवर्नमेंट ने तो कुछ 50,000 BTC जो है, हाँ 51,000 BTC जो है वो उन्होंने उसमें से जब्त किए। और जैसे कि करती हैं गवर्नमेंट, जब कुछ कहीं से कुछ जब्त किया जाता है तो उसकी नीलामी की जाती है, तो इस तरह से उन्होंने जो है 3 अलग अलग वॉलेट्स में जो है अभी देखा जा रहा है कि जो BTC है वो ट्रांसफर से कॉइनबेस तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बाकी 2 वॉलेट्स कौन से हैं फिलहाल पता नहीं है। और क्योंकि अब जब ये BTC ट्रांसफ़र किए गए हैं अलग वॉलेट्स में, तो ऑब्वियसली अब BTC की बिटकॉइन की सेलिंग भी आएगी, और जब सेलिंग आती है तो अपने आप मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन आता है। इसीलिए आई थिंक ये एक रीज़न है कि क्यों बिटकॉइन अभी फिलहाल डाउन है। कहाँ तो अभी हम कल परसों की भी न्यूज़ देख रहे थे, $22,500 पर था, 20,000 के नीचे, अब 20,000 के नीचे है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि 3 अलग अलग वॉलेट एड्रेसेस पे ये ट्रांसफर हुए हैं, और इसके साथ साथ कॉइन बेस पे जैसे आपने बताया तो 9,000 से ज़्यादा BTC ट्रांसफर हुए हैं, कि बहुत बड़ा अमाउंट है। Moving on, the hacker behind the exploit of decentralized finance lending platform Tender.fi has returned the stolen funds for a $97,000 bounty reward in Ether. The exploit was executed at 10:28 a.m. UTC on March 7th. The Tender.fi confirming the incident on Twitter soon after, citing an unusual amount of borrows and adding it has paused all borrowing. Blockchain data showed the exploiter used a price oracle glitch to borrow $1.59 million worth of assets from the protocol. 8 hours later, the DeFi protocol announced it had come to an agreement with the white hat exploiter, in which the hacker would repay all loans minus a 62.16 ETH bounty worth around $97,000 at current prices. तो यहाँ ये जो हैक हुआ, ये वाइट हैट हैक के बारे में जैसे हम जानते हैं कि कोई भी वेरी प्रोफेशनल, जी बिल्कुल, कोई भी अगर ग्लिच हो किसी में तो ये क्या करते हैं कि उसको एक इस तरह से दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ से इतने इन्होंने ये हैक किया, और उसके बाद उतना ही उन्हें जो बाउंटी है या उसको उतना रिवॉर्ड भी मिलता है। तो यही ये वाइट हैकर ने भी यही किया, और इसके साथ साथ इससे भी कुछ वो प्राइस मिला, और बाकी के जो एक अग्रीमेंट पूरा जो कंपनी है उसके साथ मिलकर इन्होंने उतने ही ग्लिच उन्होंने आइडेंटिफाई किया। जैसे ओरेकल ब्रिज जो हमने कहा कि हैकर ने आइडेंटिफाई किया, $1.59 मिलियन जो है उसने एक्सप्लॉइट किए, और फिर बाउंटी में $97,000 मिल गए, विच इज इक्विवेलेंट टू 62 ईथर। So good. Moving on, Binance US cleared a major hurdle in its effort to acquire the assets of bankrupt crypto lender Voyager Digital in a deal worth over $1 billion after Michael, a bankrupt judge in the Southern District of New York, overruled the various objections to the proposed acquisition. While the judge stated that he would continue to work on the confirmation order, he indicated that he was in favor of approving the deal. Binance, before the deal can be finalized, the US may need to clear some regulatory hurdles. The VGX token of Voyager increased by more than 8% in the minutes following the ruling. The plan put together after previous bidder FTX filed for bankruptcy in November was supported by 97% of Voyager creditors who responded to the proposal, which could see them recover nearly 3/4 of their holdings. The lengthy hearing began with good news from creditors, with Voyager lawyers estimated that creditors could recover 73% of their losses, up from 51% previously.
तो यहाँ पहले SEC, क्योंकि SEC की नज़र अभी फिलहाल बाइनेंस पे, तो उन्हें अक्वायर करने से मना कर दिया वर्चुअल डिजिटल को। तो लेकिन अभी फिलहाल जो एक सब डिस्ट्रिक्ट के जो एक कोर्ट के जो एक लॉयर है, उन्होंने एक तरह से हरी झंडी दे दिया है। फिर उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि फिलहाल बाइनेंस कैन गो अहेड एंड एक्वायर वर्चुअल डिजिटल। लेकिन अभी भी जो US DOG है, उन्होंने इस पर अपील डाल दी है कि वो इससे मतलब सहमत नहीं है और अभी भी फिलहाल बाइनेंस एक्वायर नहीं कर सकता है वर्चुअल डिजिटल को। ये फिलहाल अभी रोक दिया गया है। जी, तो जज ने यही कहा है कि मैं पहले से ही इस डिसीजन के फेवर में ही था। जैसे कि हमने पहले देखा कि SEC पहले ही बाइनेंस के पीछे पड़ी हुई है, तो यही रीजन इसका निकल के आ रहा था। लेकिन अब जज ने ये बोला है कि मैं तो इसके फेवर में ही था, लेकिन अभी भी वो कंफर्मेशन ऑर्डर पर जो है काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। Moving on, the registration dates for Mt. Gox creditors have been pushed back by another month. According to the announcement, the deadline has been moved from March 10 to April 6, allowing creditors to file claims for another month. The distribution deadline has been pushed back by another month as well. The distribution of assets to creditors will now start from October 31st instead of September 30. The official document cited various circumstances for the shift in deadlines, such as the progress by rehabilitation creditors in respect of the selection and registration. The creditors have the option of a lump sum payment, bank remittance, fund transfer service provider, or going through a cryptocurrency exchange or custodian. Creditors have been waiting for years to get compensated for losses incurred because of the exchange hack in 2014. Mt. Gox was a Tokyo-based cryptocurrency exchange that once accounted for more than 70% of Bitcoin transactions. In 2014, the exchange was hacked and filed for bankruptcy after thousands of Bitcoin was stolen. तो 2014 में जो ये बड़ा हैक हुआ माउंट गॉक्स में, तब की ये सबसे ज़्यादा आई थिंक पॉपुलर एक्सचेंज थी, क्योंकि इतने बिटकॉइन इसके पास में थे, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। लेकिन फिर हैक के बाद जो क्रेडिटर्स थे वो तब से अभी तक फाइल जो क्लेम्स है वो फाइल करना चाह रहे हैं। लेकिन अब फिर से मार्च से ये अप्रैल में शिफ्ट हो गई है और रजिस्ट्रेशन की भी जो डेडलाइन है वो भी सितंबर से अक्टूबर में शिफ्ट हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेट है डिस्ट्रीब्यूशन जी अक्टूबर से। बट आई होप फाइनली उनका पैसा मिल जाए और ये माउंट गॉक्स का जो पूरा केस है वो फिर बंद हो गया, बिकॉज पिछले 9 साल से ये लड़ाई चल रही है। काफी टाइम से जो क्रेडिटर्स हैं वो वेट कर रहे हैं उनके पैसे को। आई होप ये इंतजार अब खत्म हो। मूविंग ऑन, FTX Derivatives Exchange, a bankrupt digital currency trading firm, has filed a lawsuit against Grayscale Investment through its sister trading firm Alameda Research. The case was filed in the Delaware Court of Chancery and it names its CEO Michael Schonenstein as its parent company, Digital Currency Group, as defendants. According to the lawsuit, FTX seeks injunctive relief to unlock $9 billion or more in value for Grayscale Bitcoin and Ethereum Trust shareholders. If this request is granted, it will free up $250 million for FTX, which it will be able to use to repay its creditors. Grayscale Bitcoin Trust has more than $14 billion in assets under management as of time of writing. तो यहाँ पर FTX ने जो है वो लॉसूट फाइल किया है ग्रेस्केल के ऊपर, क्योंकि उनके जो पैसे वहाँ पर अटके हुए हैं, बिकॉज FTX को खुद अब इतने लोगों को पे करना है। तो यही वो जो FTX है फिलहाल वो अपने देख रहा है कि जहाँ उनका पैसा फंसा हुआ है वहाँ से अगर उन्हें पैसा मिलेगा तो आगे वो भी रिलीज करेंगे, एक पूरा स्मूथ फंक्शनिंग होगी। तो यहाँ पर ग्रेस्केल के पास ऑलरेडी 14 बिलियन ऑफ एसेट्स हैं अंडर मैनेजमेंट एंड स्टिल FTX हैज टू वेट टू गेट इट्स मनी आउट ऑफ दैट। अगर हो जाता है ऐसे ये लॉ सूट इनका क्लियर होता है तो इन्हें कम से कम $250 मिलियन जो है वो ग्रेस्केल से मिलेंगे FTX को, एंड फिर वो उस पैसे से FTX जो है क्रेडिटर्स को रीपे कर पाएंगे। जी, तो यही इंतजार रहेगा और सारे क्रेडिटर्स को भी, क्योंकि जैसे हमने माउंट गॉक्स की बात की तो वहाँ भी क्रेडिटर्स वेट कर रहे हैं और अब यहाँ भी तो FTX के भी जो जितना भी ये बकाया है ये आई होप जल्द से जल्द उन्हें मिले और जो क्रेडिटर्स हैं उनमें खुशी की लहर आए, उनका पैसा आ जाएंगे तो आई थिंक एक स्मूथ फंक्शनिंग भी होगी क्रिप्टो इंडस्ट्री की, और थोड़ा और लोगों का ट्रस्ट भी इसमें बिल्ड होगा। जी बिल्कुल। Well, that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend.